काश चीनी सदर की तकलीद में 500 सियासी शख्सियात को जेल भेज सकता। पाकिस्तान में सरमायाकारी ना आने की बड़ी वजह करप्शन है। वजीर आज़म इमरान खान का बीजिंग में चाइना कौंसिल से खिताब। मजीद बोले कि चीन के साथ आज़ाद तिजारती माहिदा करने जा रहे हैं। सरमायाकारी के फरोग और मुनाफा बढ़ाने के लिए अहम फैसले किए हैं। चीनी ताजिर फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन के ग्रेट हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी हम मनसब से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान से चीनी कंपनियों के ओहदेदारान और ताजरों की भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। उधर आर्मी चीफ का पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी अस्करी क़यादत से मुलाकात में दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की अवाम लेकर आई है और जब तक पीटीआई को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक्त तक कोई माइकल हाल इनको नहीं निकाल सकता। कोई किसी के कहने के ऊपर या किसी के ऊपर ये हुकूमत नहीं गिर सकती। अवाम के वोटों से आने वालों को कोई घर भेज सकता है, ना किसी के कहने से हुकूमत गिर सकती है। वजीर दाखिला एजाज शाह फजल रहमान पर बरस पड़े। कहते हैं मौलाना साहब के इस्लामाबाद आने का ये सही वक्त नहीं। मार्च करने वाले मुल्क के खिलाफ निकलेंगे। वजीर दाखिला एजाज शाह और मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी सहूलत काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक और बैठक। अपोजिशन जमातों की राहबर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होगा। फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च समेत नैब की कार्रवाइयों पर गौर किया जाएगा। उधर बिलावल भुट्टो ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया। मौलाना के मार्च में शिरकत से मुतालिक फैसला होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी JUIF का एहतजाज रोकने के लिए डट गए। कहते हैं हमने धरना 5 हल्के खोलने के लिए दिया, आप किस लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपको रोक कर दिखाऊंगा। ऐसा करें डेरा इस्माइल खान का नाम इस्लामाबाद रख कर वहीं बैठ जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं मुल्क की नहीं मौलाना साहब की मईशत खराब हो चुकी है। जारी अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की बड़ी कामयाबी। 10 अरब 66 करोड़ रुपए की जमीन पाकिस्तान स्टील मिल को वापस दिलवा दी। जमीनों की अलॉटमेंट के केस में एक मुलजिम ने 42 करोड़ रुपए नकद भी वापस किए। नैब रावलपिंडी ने रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। और गरीब जाएं तो किधर जाएं। अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अद्वियात 7% महंगी। शुगर, ब्लड प्रेशर और अल्सर की अद्वियात 46 रुपए तक महंगी कर दी गई। China is the fastest growing economy in the world. So we have watched China. There was a time when Pakistan is the fastest growing economy in the world. So we have watched China. There was a time when Pakistan was considered one of the fastest growing countries in Asia in the 60s. And we heard that China learnt a bit from Pakistan. And now is the time for Pakistan to learn from China. Personally, the thing that inspires me most about China, what inspires me most about China is the way they have lifted 700 million people out of poverty in 30 years. This has never happened in human history. And for someone who cares about humanity, I think this is an example which the entire world can follow and learn from China. So, for me, this is the
the most important thing Pakistan can learn, the way China has lifted people out of poverty. And what I have understood so far, China allowed their businesses to make money. China concentrated on their special economic zones, the export zones. They brought in investment from outside. They created wealth. And from that wealth creation, they spent it on the less privileged, poor section of the society. And that's how they've achieved the miracle. And that's what we intend to do in Pakistan. The other thing I've learned from China is the way China has tackled corruption. President Xi Jinping's, one of his biggest crusade has been against corruption. And from what I hear, correct me if I'm wrong, that some 400 people, ministerial level people in the last 5 years have been convicted on corruption and put behind jail. And then, you know, I read in the papers, now I don't know whether it is true, that there was a Chinese mayor who, tons of gold was found in his room. And within 5 days he was convicted. So, why is this very important for not just Pakistan, but most of the developing world to learn from? Because the most important thing is, if you have corruption, it stops investment. Corruption is one of the biggest impediments in investment coming into your country. The reason, one of the main reasons why we have not been able to develop this great potential of Pakistan has been the fact that red tapeism, and red tapeism is also because of corruption. When you slow down, by slowing down procedures through red tape, it is a way of getting speed money, corruption money. And corruption, when firms have an opportunity of, they can invest anywhere in the world, they will always invest in economies that are cleaner, economies where there are less impediments in the way of investment. So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. But unfortunately, we have a very cumbersome process, and so we hope in time we will improve it. But I do believe that this is something also, the way China has gone ahead, the way they have learned from their experiences. I went to the Chinese Communist Party, and they explained to me the process of meritocracy, how everything is analyzed, how there's a constant think tank thinking of how to improve themselves. So this is remarkable about the way China has gone ahead, and looks like it will leave all the countries behind within the next decade. Now Pakistan. Since my government has come into power, we have taken a conscious decision that we will make it easier and easier for investors to come into Pakistan, and we will want them to make profits in Pakistan. We will encourage profitability. We had a mindset where businesses, when they started making profit, there was some sort of an envy in our system, in our bureaucracy, amongst our politicians, and they would somehow want to pull them down. This government is the first government since 1960s which is encouraging businesses now, which wants them to make profits in Pakistan, which wants them to get rich in Pakistan. And the Prime Minister's office is driving this, the opportunities for people to invest in our country. The ease of doing business is driven from the Prime Minister's office. Now we have just formed a CPEC authority because we were having problems in CPEC projects because they were under a lot of different ministries. Now we have decided that there will be one authority which will resolve all the problems of CPEC. And that authority
will be in the Prime Minister office so that it can, my office can make it easier for people investing in Pakistan, people from China investing in Pakistan.